Good morning to respected Principal Ma'am, dear teachers and my dear friends. We, the students of Class 6, Section G, H, I and J are participating in today's assembly. The topics for this assembly are National Girl Child Day. This day is celebrated on 24th of January. It raises awareness about the inequalities that the girls face in Indian society. National Day of Patriotism. This day is celebrated on 23rd of January. On this day, Netaji Subhash Chandra Bose was born. Leprosy Day. This day is celebrated on 30th of January. It raises awareness of a disease that many people believe to be extinct. Martyr's Day. This day is celebrated on 30th of January. Chosen to honor our brave martyrs who had laid their lives for the country. Watch the program till the end and enjoy the assembly. Have a good day. नमस्कार, मेरा नाम सागरिका मंडल है। आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय देशभक्ति दिवस यानी हम उस दिन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी मनाते हैं, तो आज मैं आप सभी को उस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। वो था सुभाष, वो था सुभाष, वो भी तो खुश रह सकता था महलों और चौबारों में, लेकिन उसको क्या लेना था तख्तो ताज मीनारों से। वो था सुभाष, वो था सुभाष, अपनी माँ बंधन में थी जब वो सुख से कैसे रह पाता, रण देवी के चरणों में फिर क्यों न जाकर शीश चढ़ाता। अपना सुभाष, डाल बदन पर मोटी खाकी क्यों न दुश्मन से भिड़ जाता, जय हिंद का नारा देकर क्यों न अमर अजर हो जाता। नेता सुभाष, जीवन अपना दांव लगाकर दुश्मन सारे खूब चकाकर कहाँ गया वो, जीवन संगी सब बिसराकर ने तेरा सुभाष मेरा सुभाष, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा लेकिन उसका मोल भी लूंगा, खून के बदले आज़ादी दूंगा, बोलो सब तैयार हो क्या, गरजा सुभाष बरजा सुभाष। वो था सुभाष, अपना सुभाष, तेरा सुभाष मेरा सुभाष, नेता सुभाष, बाबू सुभाष, अपना सुभाष। धन्यवाद। जय हिंद। आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक कविता सुनाने वाली हूँ, जिसका विषय है भ्रूण हत्या। मैं युगों से अभिशापित अश्वत्थामा बोल रहा, एक भ्रूण हत्या के लिए मुझे हजारों वर्ष का यह अभिशाप मिला। अश्रु स्वेद रक्त न मेरा बाकी रहा, मुझे दंड देने को तो साक्षात कृष्ण सुदर्शनधारी थे, पर जो आज एक बेटे की चाहत में हजारों बेटियां कोख में ही मारे जाते हैं, इनका कौन इंसाफ करे। धन्यवाद। आज हम राष्ट्रीय बेटी दिवस पर आपके समक्ष बेटियों के महत्व की एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अरे बहू, सुनती हो? इस बार मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। जी माँ जी। माँ जी देखिए कितनी सुंदर परी है ना। नहीं, मुझे लड़की नहीं लड़का ही चाहिए। नहीं माँ नहीं, इसे भी जीने का अधिकार है, इसकी भी कुछ ख्वाहिश है, दिल में कुछ अरमान है, इनकी बेकदरी ना किया करो। इन्हें भी अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना है। बेटियों में तो देवताओं का वास रहता है। बेटियां ही हैं जो दोनों कुल को जमा के रखती हैं। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटियां अनमोल होती हैं। माँ जी। हाँ माँ, लड़का लड़की दोनों एक समान हैं। आज की लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर समाज में अपना और अपने परिवार तथा देश का नाम रोशन करती है। माँ, यदि बेटी ना हुई तो बहू कहाँ से आएगी। माँ बेटी ही तो घर में खुशियाँ लाती है, माँ बेटी ही तो घर संभालती है। हाँ बेटा, तुम सच कहते हो, मुझे भी बेटी ही चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।
everyone, my name is Aditi Das of class 6G. Today I am going to present a speech on Girl Child Day. Girls are equally as important as boys in the society to maintain the social equilibrium. Few years ago there was huge reduction in the number of women in comparison to men. It was so because of the increasing crimes against women such as female foeticide, dowry deaths, rape, illiteracy, poverty, gender discrimination and many more. To equalize the women in the society, it is very necessary to aware people greatly about the Safe Girl Child. Government has taken some positive steps regarding Safe Girl Child, such as Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Ban of Female Infanticide, Immoral Traffic Prevention Act, Proper Education, Gender Equality. Thank you. Greetings of the day. I'm N.K. Kaustubh from class 6A. In India, World Leprosy Day is observed on January 30 every year to commemorate the death of Mahatma Gandhi, who was assassinated on this day in 1948. This day was chosen by the French humanitarian Raoul Fulerio as a tribute to Mahatma Gandhi, who helped people affected with leprosy. World Leprosy Day is observed internationally every year on the last Sunday of January to increase public awareness of the leprosy. This year, the theme of World Leprosy Day 2020 is Leprosy Isn't What You Think. Thank you. In India, there are 6 days declared as Martyr's Day, also known as Sarvodaya Day. They are named in honor of those who are recognized as martyrs for the nation. 30 January is a date observed by national level. That day was chosen as it marks the assassination of Mohandas Karamchand Gandhi in 1948 by Nathuram Godse. On Martyr's Day, the President, the Vice President, the Prime Minister, the Defense Minister and the 3 service chiefs gather at the Samadhi at Rajghat Memorial and lay wreath decorated with multicolored flowers. A 2-minute silence in the memory of Indian martyrs is observed throughout the country at 11 a.m. Participants hold all religion ceremony and sing tribute.